We have seen the glycolysis part in the morning. So glycolysis is nothing but the oxidation of glucose into pyruvate or lactate. So in the aerobic condition, pyruvate is the end product, and in case of anaerobic, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीजन के प्रोसेस में होता है तो पायरुवेट एंड प्रोडक्ट होता है. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन के absent में होगा तो lactate is the end product. So aerobic condition, the product of glycolysis is pyruvate, and anaerobic condition product is the lactate. We have seen the energetics also. We have seen this part. It is the video is available. Okay. Energetics in the glycolysis. It is very important. Question already आ चुके हैं. So in presence of aerobic condition, the under the glycolysis, one molecule of glucose will give you 8 ATP under aerobic glycolysis. Under anaerobic glycolysis, 2 ATP. So in a very first two types of glycolysis के first two step है, उसमें 2 ATP कंज्यूम होता है. Conversion of glucose to glucose 6 phosphate and conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. In that, 2 ATPs are consumed. Okay, and at a one step, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase gives NADH, okay, which will be enter into electron transport chain and will give you 3 into 2 6 ATP. But two molecules, okay, but two molecules of glyceraldehyde are there, so right, so 6 ATP, 3 plus 3 6. Then substrate level phosphorylation is there. So glyceraldehyde 3 phosphate kinase at that time 2 ATPs, and another substrate level phosphorylation. So again 2 ATPs. So total 10 minus 2 are utilized. So 8. So you have to remember this. Okay. Now after the glycolysis, the product of glycolysis, you know that under aerobic condition, pyruvate is the product. Now, what will happen with that pyruvate? वो जो पायरुवेट मिला है ग्लाइकोलाइसिस में, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, उसका भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. ठीक है. Metabolism of glucose takes place in a different phases. Phase 1 is known as a glycolysis. Metabolism of glucose or metabolism of carbohydrate takes place in a 3 different phases. First phase is nothing but the glycolysis. So end product is a pyruvate. End product is a pyruvate or pyruvic acid, right? Now that pyruvate is converted into acetyl CoA. That pyruvate is converted into acetyl CoA, right? Acetyl CoA. That is the second part or second phase. पहले फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड बनता है या फिर पायरुवेट बनता है. ठीक है, एरोबिक कंडीशन में. एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता है, वो अलग बात है. वी हैव सीन दैट. नाउ पायरुवेट which is formed because of the glycolysis, so that is converted into acetyl CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. Okay, and this is a irreversible step. ये क्या है? Irreversible step. Pyruvate to acetyl CoA, that is a irreversible step. This cannot be reversed. इसको reverse हो ही नहीं सकता. ठीक है. Now and after in the third phase of glucose metabolism, so TCA cycle. So TCA cycle, this acetyl CoA is oxidized into carbon dioxide and water in a TCA cycle, which we are going to say. So irreversible steps in the glycolysis. क्वेश्चन कम से कम 2 बार आ चुका है. irreversible steps, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट. ठीक है. So regulatory step and irreversible step. See, there are 3 steps which are catalyzed by kinase enzyme. जो kinase enzyme जो है glycolysis में, वो 3 स्टेप कैटलाइज करता है. पहला है conversion of glucose to glucose 6 phosphate, that is a irreversible step. दूसरा irreversible step है आपका conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate. So that is also catalyzed by phosphofructokinase. पहला स्टेप है that is catalyzed by hexokinase, conversion of glucose to glucose 6 phosphate. Conversion of fructose, अब बोलेंगे fructose 6 phosphate, conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate, that is done by phosphofructokinase. So that is also irreversible step, and it is irreversible as well as regulatory step in the glycolysis. Glycolysis को regulate करने वाला ये step है. That is a conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. And lastly एक होता है phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate. So that is by pyruvate kinase.
दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल स्टेप। तो जो पहला स्टेप है काइनेज ने एक्सोकाइनेज ने कैटलाइज किया वाला इरिवर्सिबल होता है, सेकंड दिस स्टेप एंड थर्ड। So there are three irreversible steps. Okay, there are three irreversible steps in the glycolysis. Remember. Now, what do you mean by pasture effect? What do you mean by pasture? क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। pasture effect, pasture effect क्या है? Crabtree effect क्या है? So pasture effect. What do you mean by pasture effect? Decrease in the glycolysis under aerobic and under anaerobic condition. In absence of oxygen under anaerobic condition, decrease in the glycolysis under anaerobic condition in presence of oxygen. अगर anaerobic condition में glycolysis चल रहा है और आपने उसमें एयरेशन किया, एयरेशन मतलब एयर डाल दिया या फिर ऑक्सीजन डाल दिया, so that decreases the glycolysis. So decrease in the glycolysis under anaerobic condition in presence of oxygen or aerobic glycolysis is decreased by aeration. So anaerobic glycolysis is decreased by aeration. anaerobic glycolysis चल रहा है, लैक्टेट बनेगा प्रोडक्ट और आपने क्या किया उसमें ऑक्सीजन डाल दिया या फिर एयर डाल दिया, एयर सप्लाई किया, सो जो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था वो डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन द ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की वजह सिंपली लैंग्वेज में याद रखो, anaerobic glycolysis is decreased, the rate of anaerobic glycolysis gets decreased upon the application of oxygen और upon the supply of air. So anaerobic glycolysis चल रहा है, उसमें अगर एयर सप्लाई करेंगे तो उसका रेट डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज इन द ग्लाइकोलाइसिस अंडर anaerobic condition in presence of oxygen or anaerobic glycolysis is decreased by aeration मतलब supply of air. So it was observed by, this phenomenon was observed by one scientist known as a Pasteur. Pasteur was observed this phenomenon. He was studying the fermentation of glucose by yeast. ईस्ट मतलब जो आप ब्रेड के लिए जो बैक्टीरिया ब्रेड बनाते हैं वही ईस्ट। सो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट इन anaerobic condition is decreased by supply of oxygen. In the oxygen in present of oxygen, in oxygen if oxygen is present less, okay, in presence of oxygen मतलब if you supply the air or if you supply the oxygen to the anaerobic glycolysis, so he observed that fermentation of glucose by yeast cell in presence of oxygen, less amount of glucose is broken and converted into alcohol. तो ये बैक्टीरिया करते हैं अल्कोहल को, मतलब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, yeast will convert glucose into alcohol. So in the fermentation of glucose, Pasteur observed that the rate of glycolysis is decreased upon supply of oxygen or supply of air, and less amount of glucose is broken and converted into alcohol. But in absence of oxygen, more alcohol is produced. More alcohol was produced. This phenomenon of inhibition of glycolysis in presence of oxygen is known as a Pasteur effect. Okay? Inhibition of glycolysis in presence of oxygen is known as Pasteur. इसमें कुछ डाउट? Yes, anybody? समझ में आया Pasteur effect? समझ में आ गया? Okay? Now another effect is there known as a Crabtree effect. Crabtree मतलब क्या? खेकड़ा. Crab मतलब खेकड़ा. Crabtree effect. So what is that? Decrease the respiration of cellular system. Caused by high concentration of glucose. So that is opposite to the Pasteur effect. Pasteur effect क्या है कि glycolysis decrease होता है upon supply of oxygen in anaerobic condition. और Crabtree effect क्या है, decreased cellular respiration caused by high concentration of glucose. अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा. So that is a Crabtree effect. Okay, Crabtree effect. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको. Pasteur effect के बारे में ऑलरेडी पूछा है. नेक्स्ट इज नथिंग बट द डेंटल कैरीज एंड ग्लाइकोलिसिस. एक टर्म आता है डेंटल कैरीज. व्हाट डू यू मीन बाय डेंटल कैरीज? यू माइट हैव सीन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको अगर पढ़ाया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें ये आता है dental caries. Dental caries is the condition where there is a cavities, there is development of cavities, there is a decrease in the enamel. Dental caries. Okay, so destruction of enamel of the teeth by acids which is produced by bacteria.
जो आप खाना खाते हो ना, रात को ब्रश नहीं करते, खाना खाते, ब्रश तो करना ही नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं या क्या चल रहा है, ब्रश नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग इज हार्मफुल टू द टीथ मेरे हिसाब से। और बहुत सारे डेंटिस्ट जो थे वो भी बोलते हैं ब्रशिंग इज द हार्मफुल फॉर, मतलब ब्रशिंग की वजह से इनेमल निकल जा रहा है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम बहुत जाता है। मैं डेली ब्रश नहीं करता हूँ, अल्टरनेट डे में ब्रश करता हूँ। और डेली क्या करता हूँ, अपनी जो उंगली है उससे मैं आई यूज टू क्लीन माई टीथ यूजिंग योर ओन फिंगर, दैट इज द बेस्ट वे। आप जब फिंगर के साथ में जो भी आपका फाइन कोलगेट का पाउडर या फिर पेस्ट है उससे क्लीन करो, तो उसमें क्या होता है कि आपका इनेमल ज़्यादा लॉस नहीं होता और सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा विदाउट यूजिंग द सेंसोडाइन क्रीम। ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या है, पहले घिसो, ब्रश ब्रश ले लो, घिसो पूरा दांत, पूरा पूरा घिसने का दिखाते हैं टीवी पे, वो ही यूज उसको ही देख के अपन ब्रशिंग करते हैं। और बाद में क्या होता है कि सेंसिटिविटी आता है और बाद में बोलते हैं सेंसोडाइन ले लो, मतलब पहले ही ये सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करते हैं अपने को। सो ऐसा नहीं है, तो डेली ब्रश मत करो। और एक एक घंटा, कुछ कुछ लोगों को तो आदत होती है मस्त बैठते बाहर 1 घंटा ब्रश कर, तू सामने वाली खिड़की पे कोई फूल दिख रहा है वो घिस रहे उसको देख के, ऐसा नहीं करना है। एक एक घंटा अगर आप दांत घिसते रहोगे तो सेंसिटिविटी तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली इनामल लॉस होगा। ओके, so what is enamel? Enamel is nothing but the outermost covering of your teeth. Enamel is nothing but the outermost covering of your teeth. Outermost covering of your teeth is enamel, and that is the toughest part in the body. सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है enamel of the body, toughest part of your body. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, toughest part of body enamel. Now dental caries means was destruction of enamel of teeth by acids which are produced by bacteria. Normally these Streptococcus mutans and Lactobacillus, they digest or they ferment, they cause fermentation of glucose and food. आप जो खाना खाते हो जो बचता है दांतों के बीच में, जो कैविटीज के बीच में बचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलस, दे विल फर्मेंट दैट रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स and convert it into lactic acid which corrode your enamel, and that's why there is destruction of enamel. So that is known as dental caries. Okay, in the cavities in absence of oxygen. So dental caries and glycolysis उसका एक relation है. Why there is a dental caries due to glycolysis? So anaerobic glycolysis which is occurring in the cavities due to this bacteria, they will convert food particles or glucose into the lactic acid which will cause destruction of your enamel, which will cause erosion of your enamel. That is known as dental caries. Okay, so partial effect याद रखो, क्राफ्टली इफेक्ट, डेंटल caries उसके इसमें इसके ऊपर नहीं आता है क्वेश्चन कभी, याद रखना है आपको। रेपापोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल, रेपापोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें नहीं है। रेपापोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल ये आपको ना पढ़ाया भी होगा, Rappaport bearing cycle. So supporting pathway for glycolysis in the RBC. ये क्या है? It is alternative or supporting pathway, not alternative. Supporting pathway for the glycolysis in the red blood cells, जो आपका erythrocytes होता है RBC उसमें, of the humans and other animals also. So it is related with the synthesis of 2,3-bis-phosphoglycerate. So it is related with the synthesis of 2,3-bis-phosphoglycerate. Glucose is converted to lactate via 2,3-bis-phosphoglycerate. तो ये भी एक साइकिल है. Now what is the significance of that 2,3-bis-phosphoglycerate? क्यों बनता है वो 2,3-bis-phosphoglycerate? ये नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है. Importance or significance of that 2,3-bis-phosphoglycerate. So it allows glycolysis to proceed without synthesis of ATP. It is an alternative pathway again. So supporting pathway for glycolysis in the RBC. Okay, in the RBC, it allows glycolysis to proceed without synthesis of ATP. This Rappaport Lubering cycle is a shunt pathway for glycolysis to dissipate the waste energy not needed by RBC. मतलब ये इसके लिए होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसका उसका डिस्पोज करना है. So it allows the glycolysis to proceed without producing ATP
It is a shunt pathway for glycolysis despite or waste of energy not needed by RBC to dispose of. Then 2,3-base phosphoglycerate combines with the hemoglobin and reduces the hemoglobin affinity for the oxygen. Hemoglobin क्या है, RBC में hemoglobin आता है. So in that hemoglobin oxygen used to tie, oxygen tie होता है hemoglobin के साथ में, and hemoglobin का काम ही होता है कि oxygen carry करना. So that's why, okay, oxygen carrying is the function of hemoglobin. So this 2,3-bis phosphoglycerate, it will combine with the hemoglobin and it will reduce the affinity of the oxygen. So in presence of 2,3-bis phosphoglycerate, oxyhemoglobin unloads more oxygen to the tissue. मतलब क्या, तो 20 फॉस्फोग्लिसरेट आए, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ये हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है और उसका एफिनिटी कम करता है. इट विल रिड्यूस द एफिनिटी द ऑक्सीजन. ठीक है. सो द इन प्रेजेंस ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन विल अनलोड, मतलब ज्यादा देगा टिश्यू को. कितना विल अनलोड मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यू. ओके, मोर ऑक्सीजन टू टिश्यू. सो 2,3-bis phosphoglycerate will allow the supply of oxygen in case of anemia. जिसको anemia है, उसको anemia है, उस in that case also ऑक्सीजन का सप्लाई देने के लिए ये 2,3-bis phosphoglycerate it allows the supply of oxygen in anemia, in hypoxia, fetal tissue and high altitude. जब आप बहुत सारी ऊंचाई के ऊपर जाते हो तो आप वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है. So in that condition this 2,3-bis phosphoglycerate combines with the hemoglobin and will decrease the affinity of hemoglobin to the oxygen, so that more hemoglobin will supply more oxygen to the tissue. कुछ ऐसा ये है इसका सिग्निफिकेंस. आपको बस इतना याद रखना है कि 2,3-bis phosphoglycerate का सिग्निफिकेंस क्या है. It will increase the it will okay, so it will reduce the affinity of hemoglobin with the oxygen, and hemoglobin is able to supply more oxygen in case of less oxygen level. जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है और ऑक्सीजन कम है तो ये 2,3-bis phosphoglycerate oxygen supply ज़्यादा करता है. Now fate of pyruvic acid. So in the glycolysis your end product is a pyruvate, right? So your end product in the glycolysis is a pyruvate acid, pyruvic acid or pyruvate. So what is the fate of that pyruvate? तो pyruvate का क्या होगा, क्या होगा उसका? Pyruvate is converted into acetyl CoA. Pyruvate is converted into acetyl CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase. Pyruvate is converted into acetyl CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase. So fate of pyruvic acid, end product of glycolysis pyruvic acid, that is pyruvate to acetyl CoA. क्या क्या हो सकता है, pyruvate का conversion किस में हो सकता है? Pyruvate can be converted into acetyl CoA first by oxidative decarboxylation in presence of oxygen. And pyruvic acid can be converted into lactic acid by reduction in absence of oxygen. Pyruvic acid can be converted into some amino acid known as alanine by amination. Pyruvic acid can be converted into glucose by gluconeogenesis. Pyruvic acid can be converted to malic acid, oxalic acid, and okay, oxaloacetic acid. Pyruvic acid to oxaloacetic acid is done by carbon dioxide fixation reaction. Pyruvic acid का क्या क्या हो सकता है? Pyruvic acid is converted to different intermediate. So pyruvic acid is nothing but the pyruvate. Pyruvate is nothing but the end product of your glycolysis. So glycolysis होने के बाद में जो end product बनता है उसका क्या होगा? Pyruvate is converted into acetyl CoA by oxidative decarboxylation in presence of oxygen. Then pyruvic acid can be converted into lactic acid by reduction in absence of oxygen. मतलब ये तो हो गया आपका anaerobic glycolysis. ऊपर वाले जो first step है that is important for Krebs cycle. Pyruvic acid can be converted into amino acid alanine by amination. Pyruvic acid can be converted into glucose by gluconeogenesis. Pyruvic acid can be converted to malic acid or oxaloacetic acid. Pyruvic acid is converted to oxaloacetic acid by CO2 fixation reaction. That is the fate of pyruvic acid. Pyruvic acid का क्या होगा? तो ये pyruvic acid से ये intermediate बनते हैं. ठीक है. Formation of acetyl CoA from pyruvic acid.
Pyruvic acid is very important because that allows the connection between glycolysis and Krebs cycle. तो pyruvic acid का acetyl CoA बनता है in presence of oxygen. In absence of oxygen, lactic acid बनेगा, which is a connecting step in the glycolysis as well as glycolysis. It will connect the glycolysis to the Krebs cycle. Now एक टर्म आता है एनालेप्रोटिक रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है 2 बार. एनालेप्रोटिक रिएक्शन, एनापैलेक्टिक रिएक्शन अलग होता है. So anaphylactic reaction is different thing. Analeprotic reaction is different thing. Anaphylactic reaction वो फार्माकोलॉजी में होता है, वो मैं उस टाइम पे बोलूँगा आपको, ठीक है. Analeprotic reaction, so sudden increase or sudden influx of pyruvic acid, sudden influx of pyruvic acid और acetyl CoA to the TCA cycle. क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा सडन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सडनली pyruvic acid और pyruvic acid का ये acetyl CoA बनता है ना, तो acetyl CoA और pyruvic acid सडन इन्फ्लक्स और सडन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pyruvic acid और acetyl CoA टू द Krebs cycle. Krebs cycle के लिए अचानक उसका रॉ मटेरियल बढ़ जा रहा है. Krebs cycle का रॉ मटेरियल क्या है, acetyl CoA. वो कहाँ से आता है, वो आता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो आता है आपका लिपोलाइसिस से, वो आता है आपका अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से. अगर वो acetyl CoA अचानक ही रॉ मटेरियल बढ़ गया TCA साइकिल का, तो क्या होगा, ओके, सीरियसली डिप्लीट द स्टोरेज ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. क्योंकि क्या है कि क्रेब साइकिल स्टार्ट ही होता है कम क्रेब साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड and acetyl CoA. So sudden increase of acetyl CoA because of the sudden increase in the pyruvic acid. Okay, so there is a depletion of oxaloacetic acid of your body. Okay, and which is required for the citrate synthesis in the first step of Krebs cycle. So because of this deficiency of oxaloacetic acid, there is some reaction, as there is some symptoms, and that symptoms and that reactions are known as analeprotic reaction, or they are also known as a filling up reaction. They are also known as a filling up reaction, analeprotic reaction. They are auxiliary reaction. They are okay. After that, auxiliary reaction to convert pyruvic acid to oxaloacetic acid and acetyl CoA. अगर ये होता है तो बॉडी में ऑक्सिलरी रिएक्शंस होते हैं, जो भी पायरुविक एसिड है उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे या फिर एसिटिल CoA में कन्वर्ट. दे आर नोन एज एनालेप्रोटिक रिएक्शन. नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल CoA. दैट इज अ connecting step between glycolysis and Krebs cycle. Connecting step, conversion of pyruvate क्या है, end product of glycolysis to acetyl CoA. Conversion of pyruvate to acetyl CoA, so it is done by oxidative decarboxylation. Decarboxylation मतलब क्या है, removal of carboxyl in presence of oxygen, which is irreversible step and catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex, PDH. इसको बोलेंगे PDH, pyruvate dehydrogenase complex. It is only found in the mitochondria, and this enzyme requires cofactors like TPP, thymine pyrophosphate, FAD, flavin adenine dinucleotide, and NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, then lipomide and coenzyme A. So ये जो pyruvate dehydrogenase complex enzyme है, that will convert your pyruvic acid into acetyl CoA, right? Pyruvic acid is converted into acetyl CoA by pyruvate dehydrogenase, and that requires many cofactors. For example, TPP, thymine pyrophosphate, flavin adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, and lipomide, then coenzyme A. These are the cofactors which are required for PDH activity, pyruvate dehydrogenase activity. तो इसका काम क्या है, टू कन्वर्ट पायरुवेट फ्रॉम पायरुवेट का आता है ग्लाइकोलाइसिस से, कन्वर्ट पायरुवेट इनटू एसिटिल CoA. क्यों करना है, बिकॉज एसिटिल CoA इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर Krebs cycle, right? बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, क्या इंपॉर्टेंट है इसका बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ते इकडे येऊन घेऊन जातो आई असं इथं शिंदे इथं लेक्चर चालू आहे माझं. Biochemical importance of pyruvate dehydrogenase. What is the biochemical importance of pyruvate dehydrogenase? Biochemical importance of pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase, if it is not there, so there is no conversion of pyruvate into acetyl CoA, okay, which is a connecting step. Now, ये कब होता है,
थायमिन deficiency. If there is a thiamine deficiency, बेटा थायमिन मतलब क्या है? थायमिन is nothing but the vitamin B1. वाटर soluble विटामिन होता है. Thiamine is a vitamin B1. So if there is thiamine deficiency, there is a less cofactor. कौन सा cofactor? Thiamine pyrophosphate. If thiamine deficiency is there, there is a less thiamine pyrophosphate cofactor. Okay, and less pyruvate dehydrogenase activity, less production of acetyl CoA. Then because of that accumulation or collection of pyruvate. दूसरा रीजन होता है इसकी विटामिन B1 डिफिशिएंट अल्कोहलिक्स. जो अल्कोहलिक्स होता है, जो बेवड़े लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका इंटेस्टाइन जो है ना वो खराब हो जाता है. उसमें देर इज अ डिक्रीज्ड कैरियर प्रोटीन जो होते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए, देर इज अ डिक्रीज्ड कैरियर प्रोटीन फॉर द विटामिन्स. And that's why alcoholics will always suffer from deficiency in the vitamins. That's why they will also have a deficiency or less activity of pyruvate dehydrogenase complex. And because of that, in the alcoholics, pyruvate is converted into lactate. Because वो ये एंजाइम ही नहीं, इसका कोई एंजाइम्स को फैक्टर ही नहीं है, तो ये एंजाइम कैसे एक्ट करेगा? क्योंकि उसमें थायमिन का डिफिशिएंसी हो चुका है. सो इन द अल्कोहलिक लैक्टिक एसिडोसिस इज द इशू. So therefore, there is a rapid development of lactic acidosis in the alcoholics. जो ड्रिंकिंग करते हैं ना, उनका ड्रिंक कर करके पूरा उनका इंटेस्टाइन में ये जो है कैरियर प्रोटीन वो उसका डेफिशिएंसी हो जाता है. And because of that, they will have a deficiency of vitamin B1 because absorption नहीं होगा तो deficiency हो जाएगा. Deficiency होगा तो ये जो pyruvate dehydrogenase है वो उसका काम नहीं कर पाएगा. It will not able to convert this pyruvate into, so this pyruvate is not able to convert it into acetyl CoA. Then that's why pyruvate का conversion होता है lactate में. lactate में हुआ है conversion तो उनको होता है lactic acidosis. Then arsenic and mercury poisoning. अगर arsenic का poisoning हुआ है, mercury का poisoning हुआ है, तो ये दोनों भी metals क्या करेंगे? They also inhibit the activity of pyruvate dehydrogenase complex. इसका activity ये inhibit, मतलब who are the inhibitor of pyruvate dehydrogenase? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. So mercury and arsenic they inhibit the pyruvate dehydrogenase activity. इसमें भी क्या बन जाएगा? lactic acidosis हो जाएगा. ठीक है, that is the biochemical importance of pyruvate dehydrogenase. Important है. Now you can see the reactions catalyzed by that. So pyruvate is the end product of your glycolysis. Pyruvate का structure that is converted into hydroxymethyl thymine pyrophosphate. Why? So it is converted by pyruvate dehydrogenase. Okay, oxidative decarboxylation. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव है CO2. So this part is attached to a acetyl जो है ना, acetyl part will be attached to a thymine pyrophosphate. Thymine pyrophosphate क्या है? It is a co-factor for this pyruvate dehydrogenase. ठीक है. Now it is उसके बाद में it is coupled with another enzyme known as dihydrolipoyl transacylase. Dihydrolipoyl transacylase एक एंजाइम के साथ में कपल होता है. So it will transfer acetyl group. It will transfer acetyl group to the lipomide. Lipomide क्या है? Lipomide is also another co-factor for this enzyme. So you will get a acetyl lipomide and TPP will be release free. TPP फ्री हो जाएगा. TPP क्या करेगा? ये पूरा acetyl इसको ट्रांसफर कर देगा. And after that, from the acetyl lipomide there is a release of acetyl CoA. There is a release of acetyl CoA and your oxidized lipomide will be again recycled. This reaction is the reduction and oxidation of lipomide, reduced lipomide and oxidized lipomide. It is coupled with the another dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme. So that will convert FADH2, and this is also coupled with the conversion of NAD to NADH. NADH यहाँ पे भी मिलेगा. NADH यहाँ पे मिलेगा. It will give you 3 ATP. One NADH molecule will give you 3 ATP. But यहाँ पे glycolysis कितना molecule है? Glycolysis में से कितना pyruvate आया? So there are 2 pyruvate molecule from the glycolysis. So you are going to get here 6 ATP. मतलब देखो अभी 8 ATP of glycolysis plus 6 ATP of this reaction and 12 ATPs of your Krebs cycle.
So total 38 ATP, total 38 ATP होता है. One molecule of glucose when completely oxidized by Krebs cycle as well as glycolysis as well as this step, you are going to get this 38 ATP. कैसे होता है वो अपन बाद में देख लेंगे next. Now pyruvate, okay. Acetyl CoA is known as a central molecule. Acetyl CoA क्या है? It is a connecting molecule with the many intermediate and metabolism. Acetyl CoA क्या है? Connecting molecule. So glucose का oxygen, glucose will be oxidized into pyruvate. Pyruvate will give you acetyl CoA. सबसे पहले तो यही नॉर्मल होता है ना, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुवेट मिलेगा आपको. पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ओके. नाउ लिपिड्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है. इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स फाइनल एंड प्रोडक्ट इज नथिंग बट द एसिटिल कोए. इन द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म finally acetyl CoA is the end product. In case of amino acid metabolism also, end product is acetyl CoA, and this acetyl CoA can be utilized for either oxidation. Oxidation कहाँ पे होगा? It will enter into the Krebs cycle. Oxidation is nothing but the Krebs cycle. It will enter into the Krebs cycle, acetyl CoA. Then from that acetyl CoA fatty acids will be synthesized. Lipogenesis, lipid synthesis ये भी हो सकता है. From that acetyl CoA cholesterol synthesis will be there. From that acetyl CoA steroid hormone synthesis will be there. From that acetyl CoA ketone bodies are synthesized. So acetyl CoA मतलब acetyl CoA coenzyme A, that is again central molecule. उससे भी मतलब acetyl CoA is the end product of metabolism of carbohydrate. Okay, acetyl CoA is the end product of metabolism of carbohydrate by glycolysis. Glycolysis होने के बाद में then also it is the end product of your fatty acids. It is the end product of your amino acids. तो देखो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, इनका मेटाबॉलिज्म होके लास्टली क्या बनता है? एसिटिल कोए. एसिटिल कोए इसका ऑक्सीडेशन होता है. सो इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय क्रेब्स साइकिल, टीसी साइकिल. उससे ही आपको फैटी एसिड सिंथेसिस, lipid synthesis, that is fatty acid, then cholesterol synthesis and synthesis of steroid hormone and also ketone body synthesis. So ये मिले. ठीक है. Now you can see the Krebs cycle over here. So Krebs cycle is known as a TCA cycle. Krebs cycle is also known as a TCA cycle. इसको TCA cycle क्यों बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक OH ट्राई कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे भी that's why it is known as ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. It is also known as a citric acid cycle. TCA cycle is also known as a tricarboxylic acid cycle, also known as a citric acid cycle. क्यों बोलते हैं citric acid? Because in this citrate means citric acid is there. This citrate, okay, citrate. That's why Krebs cycle is known as a TCA cycle, citric acid cycle, and tricarboxylic acid cycle. Now it start with the ये जो acetyl CoA है, acetyl CoA which is formed from pyruvate to, okay, which is formed from pyruvate. Acetyl CoA is formed from pyruvate by pyruvate dehydrogenase complex reaction. So that acetyl CoA will enter into the Krebs cycle. ये acetyl CoA कहाँ से आएगा? Metabolism of glucose, metabolism of your lipids, metabolism of amino acids. So all metabolism will give you acetyl CoA that will enter into Krebs cycle. So Krebs cycle में क्या है? So acetyl CoA will be condensed with the oxaloacetate. Oxaloacetate मतलब oxalic acid simply. Okay, so oxaloacetate. So it will combine with the oxaloacetate, acetyl CoA plus oxaloacetate. The reaction is catalyzed by citrate synthetase. You will get a citric acid. So this is a citric acid or simply citrate. Citrate synthetase will catalyze the condensation of your oxaloacetate or oxalic acid with the acetyl CoA to form a citric acid. Then citric acid is converted into isocitric acid by isomerase enzyme. Isocitric acid. So this is a
isocitrate, isocitric acid. Now this step is two step reaction. ये एक step में नहीं होता है, दो step में होता है. First conversion of citrate into aconitase and then isocitrate. वो अपन बाद में देख लेंगे. Okay? And isocitrate is converted into alpha ketoglutarate. Isocitrate का conversion होता है alpha ketoglutarate by citrate dehydrogenase enzyme. Citrate isocitrate dehydrogenase enzyme. Then alpha ketoglutarate at this stage you are going to get NADH. And after that isocitrate D, okay, alpha ketoglutarate is again converted into succinyl CoA by the alpha ketoglutarate dehydrogenase. So once you get succinyl CoA से बनता है आपका succinate. Succinyl CoA is converted to succinate. In between यहाँ पे NADH एक बना है, यहाँ पे NADH बनता है, यहाँ पे NADH बनता है, यहाँ पे एक substrate level ATP बनता है. Then succinate is converted into fumarate. Succinate मतलब succinic acid. Fumarate मतलब fumaric acid. So fumarate. तो यहाँ पे FADH मिलता है. Remember NADH molecule, it will go electron transport chain. It will go to ETC and will produce 3 ATP. Then this FADH will go into the ETC and it will produce 2 ATP. FADH आपको 2 ATP देगा, NADH आपको 3 ATP देगा. ठीक है. Now succinate is converted to fumarate. Succinate dehydrogenase enzyme. Fumarate is converted to malate. Okay, by malate synthesis enzyme, and malate is converted into oxaloacetate, and again NADH is released. ये अपन नेक्स्ट इसमें फिर से देखेंगे, एनर्जेटिक्स भी देखेंगे. You can see over here, pyruvic acid is the end product of your glycolysis, which is converted into acetyl CoA by the pyruvate dehydrogenase enzyme. Acetyl CoA is also metabolic end product of fatty acid. फैटी एसिड का भी मेटाबॉलिज्म होके एसिटिल CoA बनता है. ये पायरुविक एसिड का ग्लाइकोलाइसिस से मेटाबॉलिज्म होके एसिटिल CoA बनेगा लास्ट में. ओके. नाउ ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से बनता है? पायरुविक एसिड से ही ऑक्सैलिक एसिड बनता है. ठीक है. बट यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ पे क्या याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, इस ऑक्सैलो एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, so it will condense with the acetyl CoA to form a citric acid, citrate. It is catalyzed by citrate synthesis. Citrate is converted into isocitrate. It is a two-step reaction. यहाँ पे दो स्टेप में होता है. पहला स्टेप क्या है? Citrate first converted into cis aconitase. यहाँ पे एंजाइम है aconitase, and then cis aconitate is converted to isocitrate by enzyme aconitase. ये छोड़ो, आपसे भी इतना याद होगा, citrate, isocitrate. Now, isocitrate is converted into oxalosuccinate by the enzyme isocitrate dehydrogenase. यहाँ पे यहाँ पे एक NADH मिलेगा आपको. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा ETC to respiratory chain and will give you 3 ATPs. ठीक है. यहाँ तक पहला 3 ATP यहाँ पे मिल गया आपको. ठीक है. Now oxalosuccinate is converted into alpha ketoglutarate. ऑक्सैलोसक्सिनेट, उसमें ग्लूटामेट ऐड किया जाता है. इसमें ग्लूटामेट भी ऐड होता है, एंड कंडेंसेशन ऑफ ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलोसक्सिनेट by the enzyme associated dehydrogenase, that will give you alpha ketoglutarate. Okay? Alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA enzyme A. ठीक है. By the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, and this is a regulatory enzyme. It is a regulatory step, irreversible and regulatory step in the Krebs cycle. जैसे होता है ना कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा स्टेप रेगुलेटरी है? सो कन्वर्जन ऑफ fructose 1 phosphate to the fructose 1,6 bis phosphate, that is the regulatory step in the glycolysis. Likewise ये irreversible step है and regulatory step है in the Krebs cycle. So remember, now at this step you are going to get again NADH. आप एक NADH मिला, ठीक है. It will give you 3 ATP. This succinyl CoA is converted into succinate by the enzyme succinate thiokinase with the release of one substrate level ATP.
when succinate is converted into fumarate. Succinate is converted into fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase. Fumarate, okay, and this is coupled with the production of FADH2. एक FADH2 क्या करेगा, ETC में जाएगा और 2 ATP देगा, ठीक है. Now fumarate is converted to malate by fumarase enzyme. Malate is converted into oxaloacetate by the malate dehydrogenase, which is also coupled with the production of NADH. ये क्या करेगा, 3 रिपीट. भाई देखो एनर्जेटिक्स काउंट करो, एटीपी कितना मिलता है एनर्जेटिक्स, ठीक है. सो फर्स्ट पहला एटीपी कहाँ मिला आपको, एनएडी. एनएडी इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीएच एट दिस conversion of associated to oxalosuccinate by associated dehydrogenase. यहाँ पे देखो NADH will go ETC will produce 3 ATP, ये 3 हो गए, ठीक है. Then conversion of this alpha ketoglutarate to the succinyl CoA. So at the time also you are going to get NADH, so 3 ATP. Conversion of succinyl CoA to the succinate. So at that time you are getting 1 ATP. Substrate level phosphorylation. From succinate you are going to get fumarate. At that time also FADH2 means 2 ATP, 2 ATP. And from malate to oxaloacetate, so NADH is produced, so 3 ATP. देखो 3 plus 3 plus 3 कितना होगा, 9. 9 और ये कितना होगा, 10. 10 plus 2 12. So one molecule of acetyl CoA will give you 12 ATP. कितना, 12 ATP. बट यहाँ पे एसिटिल कोए कितना है, 2 बनेगा ना. 2 कैसे बनेगा, जब पायरुविक एसिड 2 बना है तो एसिटिल कोए भी 2 बनेगा. बिकॉज इन द ग्लाइकोलाइसिस वी हैव सीन 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are going to get upon the splitting of 1,6 bis phosphate, 1,6 biphosphate, 1,6 bis phosphate, sorry, fructose 1,6 bis phosphate. From that you are going to get 3 glyceraldehyde 3-phosphate molecule, sorry, 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecule. From that 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecule you are going to get 2 pyruvic acid molecule. From 2 pyruvic acid you are going to get 2 acetyl CoA molecule, right? So from one molecule of glucose how many ATPs are synthesized, we'll see. So यहाँ पे इतना है, 1 acetyl CoA will give you 12 ATPs, right? 12 ATPs. So 2 molecule लेते कितने देगा, 24. You just remember 24 ATPs you are going to get in the Krebs cycle. Okay? Now energetics देखो आपका glycolysis में कितना आया, 8 ATPs, 8 ATP, right? Then conversion of pyruvate to acetyl CoA, उसमें कितना आया, 6 ATPs. Krebs cycle में कितना आया, 24 ATPs. Just count करो इसको, ये बनता है 38. Yes or no? Are you getting or not? है ना. Glycolysis में मिलेगा, yes you are getting or not? You are getting 8 ATP in the glycolysis. You are getting a 6 ATP in the conversion of that pyruvate into acetyl CoA by pyruvate dehydrogenase complex, and 24 ATP in the Krebs cycle. So total 38. So one molecule of glucose after complete oxidation will provide you 38 ATPs. Clear or not? Yes. One molecule of glucose after complete oxidation will give you 38 ATPs. ठीक है. तो ये अपन बाद में फिर से और एक बार आने वाले हैं आपको, तो रिवाइज करो फिर से एक बार. So acetyl CoA produced from the pyruvic acid by pyruvate dehydrogenase or acetyl CoA from other intermediates. For example, acetyl CoA from lipid metabolism. Acetyl CoA is an end product of amino acid metabolism that will enter into Krebs cycle. So Krebs cycle start with the condensation of oxaloacetate with the acetyl CoA. ये दोनों साथ में कंडेंस हो गए और बनाएंगे साइट्रेट by the enzyme citrate synthase. Okay? By the enzyme citrate synthase. Now, citrate is converted to isocitrate with the intermediate formation of aconides. Isocitrate is converted to oxalosuccinate. Okay? Oxalosuccinate is converted into alpha ketoglutarate, right? So at that time, conversion of oxalosuccinate to the alpha ketoglutarate, you are going to get 1 ATP, sorry, 1 NADH, 1 NADH. Then alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, then succinate, then fumarate and malate. So that is the cycle. So
energetics देखो. So at this stage, conversion of oxalosuccinate to the alpha ketochloride, you are going to get one NADH. One NADH will give you 3 ATP. Okay? When conversion of alpha ketochloride to the succinyl CoA, so again at that time you have one NADH. So again 3 ATP. Conversion of succinyl CoA to succinate substrate level phosphorylation 1 ATP. Then succinate to fumarate, FADH बनता है. FADH will give you 2 ATP. Then fumarate to malate, and malate to oxaloacetate. Lastly, we will give you NADH 3 ATP. 3 plus 3 plus 3 हो गया 9 and plus 1 10 and 2 मतलब 12 ATP. 12 ATP पर मोल ऑफ एसिटिल कोए. लेकिन एसिटिल कोए कितना आता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का. एसिटिल कोए आएगा 2. 12 into 2 24. So remember 8 ATP in the glycolysis. Then conversion of pyruvate to acetyl CoA 6 ATPs. Acetyl CoA is completely oxidized in the Krebs cycle 12 ATPs. 12 20 28 24 ATPs. There's 2 molecules. Total 38 ATP. So oxidation of acetyl CoA to the carbon dioxide and water is known as a citric acid cycle or Krebs cycle. It is a central pathway. Question आ चुका है इसके ऊपर. It is central metabolic pathway. क्यों बोलते हैं इसको central metabolic pathway? Because it is the common pathway for carbohydrate. Okay, carbohydrate, common pathway for carbohydrate, lipids, lipids मतलब fat, carbohydrate, fats and amino acids. It is a combined pathway for, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस में तो आपको मिलता है एसिटिल कोए लास्ट में. ठीक है, मतलब पायरुवेट मिलता है, पायरुवेट से एसिटिल कोए. फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो एसिटिल कोए मिलेगा. अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो एसिटिल कोए मिलेगा. Right? So acetyl CoA that will enter into Krebs cycle. That's why this Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle, they are known as a central metabolic pathway. Question इसके ऊपर आ चुका है GPAT 2022 में. GPAT 2022 central metabolic pathway Krebs cycle. Okay, now it was proposed by Hans Adolf Krebs in 1937. TCA cycle is located in the mitochondrial matrix. देखो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कैसा, कौन सा साइकिल कहाँ पे लोकेटेड है. सो ग्लाइकोलाइसिस वाज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म and TCA cycle is located in the mitochondria. Remember, TCA cycle is located in the mitochondrial matrix and glycolysis is located in the cytosol. ये क्वेश्चन important है. Then irreversible steps in the TCA cycle. So pyruvate dehydrogenase. पहला तो इरिवर्सिबल कौन था, पायरुवेट डिहाइड्रोजन. मतलब जब पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, सो पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए by pyruvate dehydrogenase complex. That is the irreversible step. Then acetyl CoA synthetase. Acetyl CoA synthetase is also one. Acetyl CoA नहीं, citrate synthetase. Citrate synthetase. Acetyl CoA नहीं, citrate. Citrate synthesis step is also irreversible. So conversion of acetyl CoA into citrate with the combination of oxaloacetate. So that is also. Then isolated dehydrogenase जिसके ऊपर आपको एक NADH मिलता है, that is also irreversible step. Okay, isolated dehydrogenase will catalyze the oxalosuccinate to alpha ketochloride. Then ketoglutarate dehydrogenase will also irreversible step that will catalyze the conversion of alpha ketoglutarate to succinyl CoA. And succinate thiokinase is also irreversible. That is convert succinyl CoA into succinate. So these are the irreversible steps in the Krebs cycle. Irreversible step के ऊपर इतना ज़्यादा मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कौन सा irreversible step है कौन सा नहीं है. क्लियर ही होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. Thymine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, they are the cofactors or coenzymes required for TCA cycle. Thymine क्या है, विटामिन B1. riboflavin क्या है, विटामिन B2. Okay. Then niacin क्या है, विटामिन B6. pantothenic acid, विटामिन B5. Okay. Required as a coenzymes for TCA cycle, है ना, TPP वगैरह बनाने के. The enzyme of TCA cycle and their inhibitors. Okay. ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2023 में. ठीक है, कैसा, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल विद देयर रिस्पेक्टिव इनहिबिटर्स. एंड एक कॉलम में दिया था आपको एंजाइम्स, एक कॉलम में दिया था आपको इनहिबिटर्स. फाइंड द करेक्ट मैच.
So TCA cycles, enzymes of TCA cycle and their inhibitors. Okay. So first enzyme goes aconitase. What is the function of aconitase? It will convert citrate into isocitrate. Okay. So it is inhibited by fluoroacetate. It is inhibited by fluoroacetate. The compound of fluoroacetate will inhibit the aconitase. Then alpha ketoglutarate dehydrogenase. ये जो enzyme है, it will catalyze alpha ketoglutarate conversion of alpha ketoglutarate to the succinyl CoA. So that is inhibited by arsenate. Next enzyme is succinate dehydrogenase. So it will convert succinic acid to malic acid. It is inhibited by malonate. इसके ऊपर क्वेश्चन जीपैट 2023 में आ चुका है. कार्बोहाइड्रेट नहीं, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है. आपका कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 96% मतलब कट ऑफ मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी 96% क्या पढ़ो. So anaerosis, anaerobic reaction we have already seen. So this is due to the reaction concerned with the replenish or fill up the intermediate of acetic acid, intermediate of citric acid cycle called as anaerobic reaction, anaerosis reaction. ये already क्यों होता है ये? Because of the sudden increase in the concentration of pyruvate or acetyl CoA. Sudden increase in the concentration of pyruvate or acetyl CoA, which will deplete the oxaloacetate level of body. And that is nothing but the anaerobic reaction, anaerosis. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. ठीक है. अभी देखो एनर्जेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि यू आर गोइंग टू गेट 8 ATP. You are going to get 8 ATP under aerobic condition and 2 ATPs under anaerobic condition. Citric acid cycle में क्या है, यहाँ पे आएगा 28 ATPs, 24 ATP आता है citric acid cycle में. बट यहाँ पे मैंने 30 लिखा है. 30 क्यों लिखा है? So 30 क्यों लिखा है यहाँ पे? Because 6 ATP will come from the pyruvate conversion of pyruvate to acetyl CoA. So 6 plus 24 30, and that's why one molecule of glucose under aerobic condition will give you 38 ATP. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आ चुका है. अंडर एनारोबिक कंडीशन अगर ऑक्सीजन है तो 38 ATP मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो 2 ATP मिलेगा. एक molecule of glucose, one glucose will give you 38 ATP, right? Under anaerobic condition 2 ATP. You have to remember this. Energetics confuse नहीं होना है कौन सा भी. Now GPAT 2023 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इसमें रोल ऑफ विटामिन इन द TCA साइकिल, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, रोल ऑफ विटामिन इन द TCA साइकिल GPAT 2023, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सेम एज इट इज, यही ऑप्शन थे और यही थे, एक दूसरा था. ठीक है. सो रोल ऑफ विटामिन इन द TCA साइकिल. फर्स्ट विटामिन इज द राइबोफ्लेविन. इट इज नोन एज द विटामिन B2. इट इज नोन एज विटामिन B2, C2 का B2, विटामिन B2. राइबोफ्लेविन हैज अ फंक्शन. APD ಇಲ್ದಾನೆ APD, ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಡೆನಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, APD. It is a cofactor for succinate dehydrogenase. It is a cofactor for succinate dehydrogenase. Then niacin क्या है? विटामिन B6, विटामिन B3, B6 तो पेरिडोक्सिन होता है, विटामिन B3. So it will produce you B6 है nicotinamide, B3, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD. So that is a cofactor. Okay. It is a electron acceptor for isocitrate dehydrogenase. As it is question, इसके मतलब ये टेबल के ऊपर क्वेश्चन था कि NAD नियासिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है. It is a electron acceptor for isocitrate dehydrogenase. ठीक है. राइबोफ्लेविन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? It is a cofactor for succinate dehydrogenase. Thymine and lipoic acid, vitamin B1 and lipoic acid. Thymine diphosphate is a cofactor for alpha ketoglutarate dehydrogenase. यहाँ पे देखो अल्फा ketoglutarate dehydrogenase. लिपोइक एसिड भी उसके लिए लगता है. पेंटोथेनिक एसिड किसके लिए लगता है? इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम A, फैक्टर अटैच्ड टू succinyl CoA.
क्वेश्चन एज इट इज इसके ऊपर आ चुका है जीपैट 2023 पेपर। जब थोड़ी देर कुछ दिन के बाद में पेपर भी आएगा उसका, मैं बना रहा हूँ उसका पेपर, अभी टाइप कर रहा हूँ सब कुछ, तो आएगा उसका। तो याद रखो क्वेश्चन आ चुका है इसका। इज को फैक्टर मीन CO नॉट KO। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। रोल ऑफ विटामिन इन द TCA साइकिल। विटामिन का क्या रोल है? विटामिन दे आर नोन एज अ वाइटल अमाइंस। विटामिन को विटामिन क्यों बोलते हैं? विटामिन, देखो विटा क्या है? वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, मीन मतलब क्या? अमाइन। सो दे आर द वाइटल अमाइंस फॉर द बॉडी, दे रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उनका डेफिनेशन में ये है। So first is nothing but the riboflavin. जब when we'll see the vitamin chapter in the detail, at the time also I will explain. Riboflavin known as the vitamin B2, thiamine B1, riboflavin B2. So it is a component of flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide, which is a cofactor for this enzyme, succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. क्वेश्चन ऐसा ही था, राइबोफ्लेविन इज रिक्वायर्ड फॉर कोफैक्टर फॉर, नेक्स्ट कॉलम में था सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, एसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज। तो नियासिन, नियासिन मतलब विटामिन B3, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड व्हिच इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज। मतलब ये एसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज के लिए लगता है कोफैक्टर। थायमिन एंड लिपोइक एसिड, दैट इज द थायमिन डाइफॉस्फेट, इज अ कोफैक्टर फॉर alpha ketoglutarate. Then pantothenic acid coenzyme, it is a part of coenzyme A. As it is question था, आप जाके देखो cofactor for succinyl CoA also। तो एक कॉलम में दिया था उन्होंने ये ऐसा, राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, देन पैंटोथेनिक एसिड, लिपोइक एसिड। एक कॉलम में ये विटामिन के नाम दिए थे यहाँ पे, और एक कॉलम में यहाँ पे ये दिया था सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, एसोसिएटेड डीहाइड्रोजनेज, कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंड पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, एज इट इज। तो ये एक ही टेबल के ऊपर 4 मार्क्स मिलते हैं। जिसने ये कहा दिया है, इट इज गिवन इन द सत्यनारायण एज वेल एज इट इज गिवन इन द, देयर इज वन बुक वन मोर बुक, बायोकेमिस्ट्री बाय चटर्जी। सो ये दोनों बुक में ये दिया है, जिसने पढ़ा उसने करेक्ट किया था, जिसने नहीं पढ़ा वो गया। देन इंटरमीडिएट गिविंग द अमीनो एसिड्स, कौन से इंटरमीडिएट जो है उससे अमीनो एसिड बनता है। सो इंटरमीडिएट व्हिच विल गिव यू अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट इज अ पायरुवेट, पायरुविक एसिड जो है दैट विल गिव यू ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, सिस्टाइन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन। व्हेन विल सी अमीनो एसिड चैप्टर, एट द टाइम विल कम टू नो इन द डिटेल रिगार्डिंग दिस। अभी आपको नाम मालूम भी होंगे, आपको हो गया होगा। Pyruvate will give you these amino acids. So these amino acids can be synthesized. These amino acids can be synthesized from pyruvate. So glycine, alanine, serine, cysteine, cysteine, proline, tryptophan. Alpha ketoglutarate is a precursor for the synthesis of arginine, histidine, glutamine, and proline. Fumaric acid or fumarate is the precursor for the synthesis of this phenylalanine and tyrosine. So succinyl CoA is the precursor for valine, methionine and isoleucine. तो ये चार्ट है, इम्पोर्टेंट है, आप स्नैपशॉट ले लो या फिर लिख लो। नाउ एनर्जेटिक्स पूरा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से बार बार वही चीज़ है। वन एनर्जेटिक्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैं फिर से नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा। 8 ATPs are there in one glycolysis, 8 ATP in the glycolysis, then conversion of pyruvate to acetyl CoA, 6 ATPs in the TCA cycle, total 24 ATPs। 6 ATP मतलब ये जब पूरा एडिशन करेंगे तो 24 तो 8 plus 24 plus 6 38, 38 ATP per mole of glucose अंडर एरोबिक कंडीशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है complete oxidation of glucose will give you 38 ATP under aerobic condition. Under anaerobic condition only 2 ATP। 2 ATP क्यों? क्योंकि पायरुवेट के आगे कुछ होगा ही नहीं, पायरुवेट के आगे लैक्टेट बनेगा, उसमें ही खर्च हो जाता है सब कुछ, तो वहां तक 2 ही ATP मिलते। पायरुवेट नहीं बना, पायरुवेट से बन गया लैक्टेट, पायरुवेट से एसिटिल कोई नहीं बना, तो बाकी क्रेब साइकिल तो आएगा नहीं, है ना।
क्रेब्स साइकिल नहीं आएगा, कन्वर्जन का वो नहीं आएगा 6 ATP. So only 2 ATP under anaerobic condition. Okay, 38 ATP under aerobic condition and only 2 ATPs under anaerobic condition. ये देखो यहाँ पे टोटल ATP, टोटल वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नहीं. So glucose will give you 38 ATP, glycogen will give you 39 ATP. 39 ATP glycogen कैसे देता है मैं बोलता हूँ आपको. So glycolysis we have seen, very first step of glycolysis is nothing but the conversion of glucose into glucose 6 phosphate by hexokinase में. ठीक है, तो वहाँ पे एक ATP कंज्यूम होता है. ओके, लेकिन जब ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलिसिस होता है, सो ग्लाइकोजन का डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है. So in the glycolysis of glycogen, directly glucose 6 phosphate is there. Okay? So there is no need to phosphorylate the glucose. So that's why there is saving of 1 ATP. एक ATP वहाँ पे से हो रहा था, यहाँ पे 39 उसकी वजह से आता है. 38 ATP glucose molecule, 39 ATP glycogen molecule under aerobic condition, and under anaerobic condition only 2 ATP. This is a gluconeogenesis. Gluconeogenesis. यहाँ तक रोक दिया.